नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे बैंक एम्प्लॉइज दो इश्यूज के बारे में चिंतित हैं और वेट कर रहे हैं। पहला पीएलआई, दूसरा 5 डे बैंकिंग। पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, जबकि सारे बैंकों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन अभी तक इनके अकाउंट में पीएलआई क्रेडिट नहीं हुआ। इसका सीधा संबंध यह है कि यूनियन ने कहा था कि ये रेजिडुअल इश्यूज में है एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूवमेंट इन द पीएलआई। सो चूंकि इलेक्शन का चल रहा था, गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए वेट हो रहा था, अब ऐसा कहा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स पिन होप्स ऑन न्यू गवर्नमेंट फॉर हायर पीएलआई फॉर एम्प्लॉइज। स्टेट रन बैंक्स आर होपफुल। ये एक इकोनॉमिक मैगजीन के से लिया हुआ है, वहां पे ये चीज आई है। स्टेट रन बैंक्स आर होपफुल ऑफ ए मोर lucrative performance linked incentive PLI for their employees as a new coalition government take charge. They are also likely to push for a 5-day banking week. Both bank unions and employees association have been demanding a review of the existing PLI scheme and approval for a 5-day banking week. We are hopeful that our demands will be heard by the government and force the Indian Bank Association to revise a existing structure, said a union member, requesting the anonymity. The PLI was first introduced in 2020 under the Alvin Bipartite Agreement between the IBA, Officers Association of the Bank and the Employee Union. Accordingly, bankers were eligible for a maximum of 15 days salary as PLI if year-on-year growth exceeded 15%. Some of the parameters government, the PLI, like the final settlement, should not be only based on operating profit but take into account performance on other financial parameters, said एंड अदर बैंक एग्जीक्यूटिव। और इस संबंध में अगर आप 2023 का एक वीडियो लिंक वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का सुने तो उन्होंने एक ट्विटर के भी कोट किया था। द इकोनॉमिस्ट एंड द इंटरनेशनल मैगजीन सेड इंडियाज वंस ट्रबल्ड बैंक्स आर नाउ generating huge profits. Similarly, S&P has raised rating of the Indian banks due to the improved performance of our bank. So, accordingly, our performance-linked incentive must be improved and beneficial to the employees. और दूसरी बात, 5-day banking के रिकमेंडेशन गए हुए काफी दिन हो गए और अब चूंकि नई गवर्नमेंट आ रही है और कोलेशन गवर्नमेंट है, सो दे शुड टेक द स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-day बैंकिंग. दीज टू इंपॉर्टेंट इश्यूज मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 14 days, within the 15 days. Thank you, friends. Namaskar. One more thing which is worth reading out, and I quote from Economist, the magazine, which is not known for being India favorite, or they don't treat India with a soft kid glow. They normally are very highly critical of things which happen in India. And as regards India's banks, in March 2023, their observation is worth hearing, and I read here. India's once troubled banks are generating huge profits. The Economist is saying, I'm not saying it. India's once troubled banks are generating huge profits. Similarly, unquote, similarly, Standard & Poor, S&P, the other rating agency which comes up with periodic observation on the Indian economy, has said India's banking industry country risk assessment. In that report, they have said, that is where they have said, we raised the rating for India
And as a result, they have raised it to 5 from 6. So the rating has improved as a result of the performance of banks.